मैम, ये साउंड हीलिंग होती क्या है? सो बेसिकली अगर हम इन दो वर्ड्स को स्प्लिट करें, साउंड एंड हीलिंग। सो सबसे पहले हमें समझना है साउंड क्या चीज है। साउंड एलिमेंट है स्पेस का, और हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी है, जिस तत्वों से धरती बनी है। मैटर एज इन हमारी बोन्स, मसल्स, द अर्थ। वेयर एज फायर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, थोड़ा लो हो जाता है तो हमें बीपी डाउन लगता है, थोड़ा हाई होता है तो हमें फीवर लगता है। The air that we breathe in, and water. Our bodies are 70% of water, that consists of the urine or the blood that's flowing throughout our body. The fifth element is space. Space between the molecules and atoms that creates a vibration and a frequency. So sound is basically nothing. It is a frequency and a vibration. Whereas in the layman language, हम जब sound की बात करते हैं तो साउंड हम ये बात करते हैं जो हमारे कान सुन सकते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशंस और वो फ्रीक्वेंसीज जो उस रेंज से बियॉन्ड है, अगर साइंस याद हो तो थोड़ा सा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, सिर्फ इतनी रेंज हमारे कान सुन सकते हैं। लेकिन 20 हर्ट्ज से नीचे भी साउंड होती है, वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे कान नहीं सुन सकते, हमारे नहीं सुन सकते। But still there are some mammals, some animals who can actually listen those vibrations and sounds. For example, dogs can listen a sound that is below 20 hertz, and bats and dolphins can hear the sound of the vibration that's beyond 20,000 hertz. So any frequency, any vibration itself can be called as sound. Whereas healing is the word used to revive or regenerate anything that has got damage. Now, when a frequency is particularly used on a specific part of your body or an organ, that might create a healing effect or revive your body. Whereas most of the time in a sound bath experience, we just get ourselves aligned to the main frequencies or vibrations that we are meant to be. It is not that we are going to actually heal or revive any disease with that. It might happen, totally depend on person's receiving and how intensive the sound is being played and how frequently that person is experiencing a sound bath. So when sound being actually given or being played around a person with an intention and with that intensity, with a particular frequencies by a trained person, that might create a healing in person. Whereas it can calm your body anytime you experience a sound bath, you will experience a calmness, a peaceful and a settled thing in your body. बॉडी में साउंड से कामनेस और हीलिंग इफेक्ट कैसे आते हैं? सो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि साउंड जो है वो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन है, और वो फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन भी एनर्जी है। किसी भी तरीके की एनर्जी जो हमारी बॉडी के आसपास ज्यादा रहती है या थोड़ी देर भी रहती है, तो हमारी बॉडी उसके साथ सिंक करने लगती है। साउंड का रेगुलर एग्जांपल है, अगर आप लो सॉन्ग सुनते हो, अगर आप उसके वर्ड्स नहीं भी सुनो, लो म्यूजिक सुनो, योर बॉडी स्टार्ट्स टू टेंड टू स्लो डाउन। और अगर कभी काम करने का बिल्कुल मन नहीं है एंड यू प्ले दैट डांसिंग नंबर, यू गेट दैट एनर्जी। आपने कोई खाना नहीं खाया, आपने कोई एनर्जी पैक नहीं लिया, लेकिन फिर भी यू गेट दैट एनर्जी, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो वाइब्रेशन है, वो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, और उसने आपके अंदर के सारे मॉलिक्यूल्स को वैसे जंप दिया तो आपके अंदर एनर्जी आई। तो इसी तरीके से जब ये थेरेपेटिक बाउल्स आपके आसपास प्ले किए जाते हैं, जो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से एंट्यून्ड है, जब वो प्ले करते हैं आपके पास, आपकी बॉडी सिंक करती है उन स्पेसिफिक वाइब्रेशंस के साथ, आपके चक्रा की वाइब्रेशंस के साथ। हर एक चक्रा का, हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक अपनी फ्रीक्वेंसी है, उसके अराउंड वो प्ले करने से वो अपने अलाइन में आता है। जैसे हम अपनी गाड़ी को अलाइन कराते हैं, अपनी व्हील बैलेंसिंग अलाइनिंग कराते हैं, जब हमारी बॉडी की हर एक ऑर्गन अलाइन होता है तो हमारी बॉडी बेटर वर्क कर पाती है, बेटर अपने आप के साथ सेंटर्ड रह पाती है, और सेंटर्ड रहना ही एक पार्ट ऑफ हीलिंग है और कामनेस है। ग्लिम्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं?
inhaling through your nose and exhaling through your mouth, closing your eyes, deepening your breath. 2 more times, inhaling through your nose and exhaling through your mouth. One last time with little pressure, inhaling through your nose and exhaling through your mouth like let the sound make that change that's required in your body. Let these raindrops calm your body. Let the temple bell bring that awareness, opening your third eye chakra. You can always experience this as a mode of YouTube or any video. Still, when you experience this as in physical level, just being offline around these bowls, the effect of it is 100 times more, because your body goes through that vibration and frequencies that's just around you. It is just like listening to songs on a YouTube or your mobile and going to a concert, listening to the live. So come experience either with me or anyone. Just give this gift to your body of sound that can heal and calm yourself, and stay happy.